स्क्वायर कर दें, बेरिलियम क्लोराइड BeCl. Okay. So good morning all of you once again. We are continuing with the chemical bonding, that is hybridization. हम लोग continue कर रहे हैं. Hybridization का मतलब है mixing and recasting of mixing and recasting of atomic orbitals of same energy. Mixing and recasting of atomic orbitals of same energy of an atom to form new orbitals with the same energy and maximum symmetry is called as hybridization. The newly formed orbitals are called as hybrid orbitals. Okay, so let us understand first what do you mean by sp hybridization. Small one actually. Sp hybridization. It is a mixing and recasting of one S. अच्छा, in some book Z के जगह पे S लिखा है, दोनों भी सही है. So mixing and recasting of one S and one P orbitals to form two new orbitals with the same energy and maximum symmetry, which are called as sp hybrid orbitals. And that process or the phenomenon is called as sp hybridization. Is that clear? Let us take the example of beryllium chloride, BeCl. Okay, so ये example first of all हम लोग देखते हैं BeCl2 या BeF2O, BX2 बोलते हैं actually. So यहाँ पे जो central atom है that is undergoing hybridization. So beryllium का ऐसे लिखते हैं ground state electronic configuration. Ground state electronic configuration of beryllium, that is 1s2 2s2, right? ये ground state हो गया. इसमें we have paired electrons and 2p0, इसमें एक भी electron नहीं. Next step is write excited state electronic configuration. Excited state electronic configuration of beryllium. So यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s1 and 2px1. Okay, now what will happen? There is a mixing and recasting of 1s and 1p orbital. So ये है 2s1 or this is what 2px1 to anyone. So I'll write ये है s orbital. This is s orbital. Which s orbital? 2s plus this is 2px. What will happen? Mixing will happen. The mixing, and after recasting, we'll have a new types of orbitals, which are nothing but okay. Remember that ये जो smaller lobe है ना, ये इसका है, मतलब ये अंदर नहीं है, it's a 3-dimensional, और ये जो lobe है वो इसका है. Lobe stand for electron density, probability of finding the electron. Orbitals ये हो, but ये hybrid orbital. These are called as sp hybrid orbital. Sp hybrid orbital. Okay, sp hybrid orbital. Now these sp hybrid orbitals are overlapped by
p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, क्लोरीन उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 pp5. so when I say 1 2 3 4 5 मतलब बीबीटी है, ये भी देखो ना हाफ फील्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो नया ऑर्बिटल्स बने दे आर आल्सो व्हाट हाफ फील्ड. अंडरस्टूड. So now these half-filled hybrid orbitals are overlapped by half-filled p orbital of chlorine. Okay, this is for chlorine, this is for beryllium, this is for chlorine. So अगर तुम लोग मतलब जो शेप है ना, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसलिए इसका ज्योमेट्री क्या होगा बी ई, ये हो गया सी एल, ये हो गया सी एल. लीनियर शेप. हाँ, ये जो बॉन्ड एंगल है इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल, वो कितना होता है 180 डिग्री. सो ज्योमेट्री और शेप, व्हाट इज दैट, लीनियर शेप. एंड बॉन्ड एंगल, कौन सा बॉन्ड एंगल, Cl Be Cl is 180 degree. Is that clear? Yes, please note down this part.
Done, sir. यस डन। चलो अभी हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैं तुम लोग को पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बताऊंगा। ओके, सो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है ये पहले देखो। मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें एग्जांपल है C2H2। C2H2, this is the another example. C2H2 is nothing but acetylene or ethyne। देखो कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ग्राउंड स्टेट यहाँ पे दो कार्बन है, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम तरीके से हो, ओके, सिमिलर वे। सो आई एम गोइंग टू शो यू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वन कार्बन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होगा, 1s2 2s2 and 2p2। so I can write this as, ऐसे लिखूंगा मैं। यस एवरीबॉडी विथ मी। अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा इन द नेक्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल। सो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, so it is 1s2 2s1 and 2p3। दैट मींस ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे है 1 1 and 1। okay, now there will be mixing and recasting of same 1s and 1p orbital, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp हाइब्रिडाइजेशन। बट यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है ये s ऑर्बिटल हो गया ना, और यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये px हो गया, ये py हो गया और ये हो गया pz। ये 3 डायमेंशन होगा, 3 डायमेंशन। ओके, सो ये 2s एंड ये क्या है 2p ऑर्बिटल। बट मिक्सिंग में ओनली 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट। ओके, सो ओनली 2 ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा, बाकी 2 ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। मिक्सिंग so that there is a formation of hybrid orbitals like this way। ये है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये भी sp सेम होते हैं, साइज सेम होता है। यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं बट सेम ऑर्बिटल। सर वो दो किधर गए, है वो दो भी है बट दे आर अनहाइब्रिडाइज। अनहाइब्रिडाइज मतलब जैसे p ऑर्बिटल है वैसे का वैसे ही रहेगा, एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना, मतलब ये ऐसे रहेगा, करेक्ट। तो जो दूसरा p ऑर्बिटल रहेगा ये एक p ऑर्बिटल होगा, और दूसरा जो p ऑर्बिटल रहेगा ये इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा ना। अभी मैं शो नहीं कर सकता पर ये ऐसे रहेगा, ऐसे, और यहां से पीछे से दिखेगा वो ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे रहेगा। सो दीस टू आर म्यूचुअली पर, कैन यू सी दिस, ये ऐसे है, ये p ऑर्बिटल है तो दूसरा p ऑर्बिटल ऐसे है। दीज आर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये जो अपना है दे आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। अंडरस्टूड? यस, एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट? So here I am writing these two are unhybrid orbitals. Unhybrid orbital. ठीक है ना। अभी इसके आगे क्या होगा, मॉलिक्यूल कैसे बनेगा देखो। सो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp ऑफ वन कार्बन।
Now one of the orbital is overlapped by s orbital of hydrogen. ये हाइड्रोजन हो गया 1s, सो पेयरिंग हो गया, ठीक है। नाउ इसका जो दूसरा ऑर्बिटल है दैट इज ओवरलैप बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन। कार्बन, ये कार्बन है, यस क्लियर, ये हाइड्रोजन है। तो ये जो बॉन्ड अभी बना है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड। अब मेरे पास दो ऑर्बिटल्स है, एक ऑर्बिटल है ऐसे which is unhybridized, this is unhybridized, understood। हाँ ये C मतलब कार्बन है, हाँ प्लीज, C स्टैंड फॉर व्हाट, कार्बन, ये कार्बन के लिए है। क्लियर। अच्छा अभी ये दोनों में क्या होगा, सी अभी ये दूर दिख रहा है बट एक्चुअली दे आर क्लोज इनफ so that along the sigma bond there is a lateral overlapping। so ये sigma bond के साथ साथ एक pi bond यहाँ पे बनेगा। सर और एक है ना ऑर्बिटल, यस इट इज देयर, ये देखो ये वाला ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर, ऐसे रहेगा ना ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा। सो व्हाट आई टोल्ड यू, दे आर एक्चुअली क्लोज इनफ, मतलब ये दोनों के बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। तो इसका मतलब ये दूसरा पाई बॉन्ड बना। स्ट्रक्चर समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये जो पाई बॉन्ड जो बना है इट इज बिकॉज ऑफ कलर सेम लेता हूं, ये देखो ये एक पी ऑर्बिटल है ऐसे, ये एक पी ऑर्बिटल एक एटम का, ये दूसरे एटम का, तो ये दोनों में पैरेलल ओवरलैपिंग हो गया, ओके लैटरल ओवरलैपिंग हो गया। और जो दूसरा पी ऑर्बिटल है वो ऐसा है, ये दोनों में लैटरल ओवरलैप, समझ में आ रहा है। ये देखो ये पाई बॉन्ड ऐसे बना और ये पाई बॉन्ड ऐसे बना। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उसके बीच में क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, अंडरस्टूड। तो इसका ज्योमेट्री क्या है, व्हाट इज द ज्योमेट्री, देखो अभी ज्योमेट्री एंड शेप, H सिंगल बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो यहाँ पे एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो समझ में, ज्योमेट्री शेप कौन बना रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बना रहे। बॉन्ड एंगल कौन सा, एच सी सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, अंडरस्टूड। प्लीज ड्रॉ दिस, ड्रॉ इट प्रॉपरली। ये अपने टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, राइट डाउन।
चलो हो गया, डन. Yes, sir. Done, sir. Okay, now let us move ahead. Next, yes, anybody having any doubt? यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? भाई, how are you? Fine, sir. Good. Yesterday I shared, I think I already shared that, but again I shared these notes with you. Solve the MCQs. Remember that do not solve MCQs of equivalent weight. Equivalent weight concept is not there in JEE mains or CET syllabus. So do not solve any problem based on it. Okay. चलो अभी हम लोग देखते हैं sp2 hybridization. I'm taking example now directly. sp2 hybridization. So what do you mean by sp2 hybridization? It is a mixing of 1s and 2p orbitals. Okay, देखो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल में बता रहा हूं, दैट इज BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. ओके, so ground state electronic configuration of boron, ground state electronic configuration of boron. So atomic number is 5, 1s2, 2s2, 2p1. So I can write this is the way. Okay. Now in an excited state, the electron gets jumped to the next higher energy or similar energy orbital. Not higher energy. So excited state electronic configuration. So क्या होगा? 1s2 ये हो जाएगा 2s1 and this is what 2p2. So 2s1, so unpaired electron, and 2p2 का मतलब यहाँ पे ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना. सो अभी इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं, ये है अपना 2s ऑर्बिटल एंड दीज आर 2p ऑर्बिटल. एक है px और दूसरा होगा समझो py. तीसरा ऑर्बिटल वेकेंट है ना. अभी इसमें क्या होगा? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग. कौमुदी, गुड मॉर्निंग. तो अभी जब ये मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग होगा, देन व्हाट विल हैपन? सभी गुड मॉर्निंग. तेरा कंप्लेंट है एक. ये होगा ऐसे, इसका स्मॉलर लो, ये इसका स्मॉलर लो.
स्मॉल, याद रखना ये ऊपर है, इट इज नॉट इन पेनिट्रेटेड, ये ऊपर है, 3 डायमेंशन, मतलब इट लुक्स लाइक दिस वे, ऐसे दिखेगा वो, ऐसे, राइट, ऊपर है वो, ठीक है। सो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। These are called as sp2 hybrid orbital. These are called as sp2 hybrid orbitals. Now these are overlapped by half filled p orbital of fluorine. So मैं डायरेक्टली BF3 का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं अभी। ये देखो, ये है अपना क्या, this is the hybrid orbitals of boron, ठीक है। And these are the orbitals which are coming from fluorine. Half filled, ये सेम होगा, ठीक है। ये है बोरॉन, दिस इज फॉर फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, इसलिए ये स्ट्रक्चर ना ऐसे दिखेगा, इट लुक्स लाइक दिस वे। बोरॉन इज फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो ये हो गया अपना बॉन्ड एंगल, कितना होगा 120 डिग्री। इसका शेप, ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइंगल है ना, ये देखो जोड़ दो तो ट्राइंगल बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ। आज तुम लोग को बहुत रगड़ना है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे ड्रॉ करने हैं, ओके। ड्रॉ नीटली, टेक्स्ट बुक में भी है ये स्ट्रक्चर्स, हाँ।
चलो डन, डायग्राम हो गया। यस छवि, किधर है छवि? यार वो आवाज नहीं दे रही है। छवि वर्मा हाजिर यस हो? सर। है तू? यस। हाँ तो कह, आंसर नाम लिया तो आंसर देने का यार। क्या सर, क्या बात है? माइक चल रहा है ना अभी? हाँ। फिर ड्रॉ किया? हाँ। चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट मतलब एक और एग्जांपल बता रहा हूं मैं, दैट इज C2H4 इथिलीन। यहाँ पे भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है, C2H4। ओके, सो देखो कार्बन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये अपना ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s1 एंड 2p3, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। And therefore we have now half filled, and P में भी there are 3 half filled orbitals. So mixing कैसे होगा? ये है 1s, मतलब 1s मतलब 1 2s orbital, and there are 3 p orbitals. उसमें से यूज कितने होंगे? 2, है ना? मिक्सिंग होगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ यहाँ। देखो कैसे होगा ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। These are all sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है ये? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल बचा है अपना जो अनहाइब्रिडाइज्ड, वो रहेगा ऐसे। This is called as unhybrid orbital. This is what? Unhybrid orbital. ये है sp2, ये भी है sp2, ये भी है sp2. Similar way, the second carbon is also hybridized, undergo hybridization, and therefore now we have याद रखना ये p ऑर्बिटल नहीं है, इसका नाम है sp2। p ऑर्बिटल कैसे होगा? दोनों साइड में इलोंगेट होगा ऐसे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे है? देखो एक साइड में इलोंगेशन है और दूसरे साइड में छोटा सा लोब है। अभी ये दूसरे कार्बन का ओवरलैपिंग होगा ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में। ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, राइट। और ये है इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये एक दूसरे से क्लोज है, बहुत ज्यादा नजदीक है ये, इसलिए वहां पे लैटरल ओवरलैपिंग होगा, राइट। तो ये बन गया अपना पाई बॉन्ड, है ना। और यहाँ पे है अपना हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, sp2s ओवरलैप है, sp2s ओवरलैप। ओके, सो व्हाट इज द ज्योमेट्री? स्ट्रक्चर कैसे होगा? देखो H C H डबल बॉन्ड C H एंड H। तो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ये भी कितना होगा? 120 डिग्री। और ये भी उतना ही होगा ना, 120 डिग्री। सेम वे फॉर दिस कार्बन ऑल्सो, अंडरस्टूड? प्लीज ड्रॉ दिस। इसका भी, इसको बोलते हैं प्लेनार स्ट्रक्चर। इट हैज प्लेनार स्ट्रक्चर, all the atoms are in one plane. Okay, bond angle C डबल बॉन्ड C H, और दूसरा कौन सा? H C H
दोनों में कितना होगा 120 डिग्री होगा। राइट डाउन। चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है ये सब चीजें? अभी थर्ड बता रहा हूं। थर्ड एग्जांपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसमें एग्जांपल है मीथेन CH4। सो अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर। हाँ, तुम लोग लिख लेना फिर। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, मिक्सिंग एंड कास्टिंग, एंड देन देयर इज द हाइब्रिडाइजेशन। देखो ध्यान से देखना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? ये होगा ऐसे,
ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे. So there will be 4 hybrid orbitals. There will be 4 hybrid orbitals which are obtained because of mixing and recasting of 1s and 3p orbitals. Therefore, these orbitals are called as sp3 hybrid orbitals. These are called as what? sp3 hybrid orbitals. Is that clear? Now this is overlapped by 1s orbital of hydrogen. तो ये 1s orbital of hydrogen. वत्सल है क्या? हाँ सर हूँ ना. अच्छा, तो ये हो गया ऐसे. Now this structure is, अभी ये दिख रहा है कैसे? ऐसे कुछ तो दिख रहा है ना ऐसे, बट ये क्रॉस नहीं है. It is a 3-dimensional structure. I'll show you. Wait for some time. So ये जो स्ट्रक्चर होगा ना, ये ऐसे होगा, ऐसे. ये दो जो बॉन्ड है, they are in one plane. This is going in, paper in. और ये जो है ना, इसको बोलते हैं it is coming out of the paper. So ये है कार्बन, H, H, H and H. So here the bond angle, सब bond angle equal होंगे. 109 degree, 28 minutes or 109.5 degree. Geometry of this is tetrahedral. Geometry or shape is what? Tetrahedral. अब ये टेट्राहेड्रल कैसे? वेट, पहले ये ड्रॉ करो, मैं तुम लोग को बताता हूँ कैसे है.
यस, ऑल ऑफ यू जस्ट पे अटेंशन हियर। ये देखो, ये दिख रहा है सबको जो मैं बता रहा हूँ वो? कैन यू सी दिस? एक शेप, एक मिनट में फुल स्क्रीन कर देता हूँ। हेलो, यस, हाँ, कैन यू सी नाउ? ये दिख रहा है सबको? ये है कार्बन, ये है कार्बन जो है sp3 हाइब्रिड है। तो देखो, ये जो टेट्राहेड्रल मैंने बोला था ना, वो टेट्राहेड्रल कैसे, वो देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखो, these two are in plane of the paper। ये दो हाइड्रोजन एटम, this हाइड्रोजन एटम is coming towards you, और उसके पीछे देखो एक हाइड्रोजन है, दिख रहा है ये वाला, this is going away from you। तो जो तुम लोग की तरफ आ रहा है वो है वेज, वेज मतलब सॉलिड लाइन, और जो अवे फ्रॉम है उसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, और जो प्लेन ऑफ द पेपर है उसको मैंने अपना सिंपल लाइन से दिखाया। क्लियर? दिस कार्बन इज sp3 hybrid, sp3 hybridized। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी देखो ध्यान से देखना, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मैंने जोड़ दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ पे एक फेस बनेगा, है ना, ट्रायंगुलर फेस बनेगा। देखो, सो ऐसे कितने फेसेस बनेंगे बताओ जरा? हाउ मेनी फेसेस विल फॉर्म? प्लीज टेल मी। 4 4 फेसेस बनेंगे। वेरी गुड। देयरफॉर इसका नाम है टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब 4, टेट्राहेड्रल। देखो, ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये नीचे 4, 4 फेसेस। अंडरस्टूड? एनी डाउट ओवर हियर? तो ये है स्ट्रक्चर। तो तुम लोग कैसे भी रखो उसको, कैसे भी, ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज 109.5 डिग्री। ये एंगल, कोई भी एंगल लो, कोई भी एंगल, एनी एंगल यू टेक, दैट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। दैट इज हाउ मच? 109.5 डिग्री। यस, एनी डाउट ओवर हियर? समझ में आया? कैसे भी रखो तुम लोग। ये होता है सर, ये स्ट्रक्चर आया कहां से? सीधा हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट का हाइपोथेटिकल, वो इमेजिनरी। पहले शेप आया, टू एक्सप्लेन दैट हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आया, टू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT, ये कंसेप्ट आया। अंडरस्टूड? एनी डाउट ओवर हियर? पक्का देखो, कैसे भी रखो, यू विल हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, वो चेंज नहीं होगा, कहां से भी देखो तुम। अंडरस्टूड? ओके, नाउ द सेकंड स्ट्रक्चर इज इथिलीन। ये देखो इथिलीन का स्ट्रक्चर, ये इथिलीन है। देखो, अभी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं दिखेगा, बट जो दोनों के बीच में, और ये है पाई बॉन्ड। सो जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस ऑल द एटम्स। देखो, दे ऑल आर इन वन प्लेन। सो ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर मैं इसको हाइड करूं तो ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर है। अंडरस्टूड? ये ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर है। ऑल दीज एटम्स आर इन वन प्लेन। पाई बॉन्ड हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा टू दिस प्लेन। ये स्ट्रक्चर है एसिटिलीन का। अभी इसमें कैसे मैं बताता हूं। देखो, ये जो पाई बॉन्ड है, अभी इसको मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, बट दिस इज ऑल्सो पाई बॉन्ड, वो एक ही प्लेन में है। ओके, और दूसरा जो पाई बॉन्ड है, ये देखो, ये जो है ना, ये इसको परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे। सो देयर आर 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गया अपना एसिटिलीन का स्ट्रक्चर, ऐसे रहेगा। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लाइक दिस, लीनियर शेप।
तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल है कितना है 120 डिग्री। ये कितना है 120 डिग्री। अंडरस्टूड? यस, ये है उसका मॉडल रिप्रेजेंटेशन। ये मीथेन, मीथेन, इथेन, इथीन एंड एसिटिलीन और इथाइल। गॉट इट? इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? व्हिच हाइब्रिडाइजेशन वी हैव? व्हिच हाइब्रिडाइजेशन? sp3 sp3 इसमें कौन सा है? sp2 और इसमें कौन सा है? sp1 sp1 नहीं, sp। क्लियर? एनी डाउट ओवर हियर? हाँ no प्रतीक? sir यस। श्रुति? श्रुति फॉलोड? Yes, sir. विराज? विराज सुन रहा है मुझे? अरे विराज है ही नहीं, विराज गायब। नील, हैव यू गॉट इट? जानवी? Yes, sir. गुड। सो नाउ लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट टाइप ऑफ, सो अभी हम लोगों ने 3 हाइब्रिडाइजेशन देखे, sp, sp2 एंड sp3। अभी आगे जाते हैं। ओके sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिड, अभी इसका मॉडल मेरे पास नहीं है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, बट डोंट वरी। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p3 and 3d0, correct? Vacant orbital, correct? Now ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट। सो यहां से एक इलेक्ट्रॉन भी किधर जाएगा? इधर जाएगा। सो वी राइट Ne 3s1 3p3 3d1। So in sp3d hybridization there is a mixing of 1s 3p and 1d orbital. Okay, mixing and recasting of 1s 3p and 1d orbital. So what will be the new kind of orbital? वो कैसे रहेगा वो देखो। So you may say, sir ये तो अपना sp2 नहीं, ये sp2 नहीं है। These are all 5 hybrid orbital, 1 2 3। अच्छा एक मिनट, सेम कलर रखा है तो फिर नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये sp3d ऑर्बिटल्स है। All these are sp3d hybrid orbitals, ऐसे। ओके, सो इसमें से ये जो 3 है ना वो एक प्लेन में रहेंगे। आई शो यू दैट, वेट। और ये जो 2 ऑर्बिटल है ना दे आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओके, सो अगर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सो these 3
special bonds are in one plane, triangular plane. Triangular plane. And two PCl bonds are perpendicular to this plane, above and below. Okay, so if you join this, इसको मैं join कर सकता हूँ ना ऐसे ऐसे. तो जब मैं join करूंगा, then जो मुझे शेप मिला, अभी देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे दो बॉन्ड एंगल है. एक बॉन्ड एंगल ये है, दैट इज ऑफ 90 डिग्री, और एक बॉन्ड एंगल ये है, दैट इज ऑफ 120 डिग्री. तो जो प्लेन में है उसका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, और जो वर्टिकल है उसका बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री. इसका शेप है ट्राइगोनल. व्हाई ट्राइगोनल? बिकॉज वो तीन क्लोरीन एक ट्राइंगुलर, ट्राइगोनल बाय मतलब दो, पिरामिडल. सो ये अगर मैंने बेस पकड़ा और इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो मुझे एक पिरामिड ऊपर साइड में और नीचे वाले साइड में मिलेगा. इसलिए इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल बाय पिरामिड. PCl5 का स्टेप क्या होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिड. और ये सब ऑर्बिटल जो है ऑल दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल. प्लीज राइट डाउन दिस. और वो डॉटेड लाइन कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है ना? It's an imaginary. It's an imaginary line. मतलब उसको स्ट्रक्चर दिखाने के लिए Yes, था. exactly.
चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ किया ना ये सबने? हेलो, Yes, sir. sp3d2, sp3d2, तो इसका मतलब क्या होगा बोलो? इसका एग्जांपल बताता हूं मैं। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि सपोज कोई भी एक मॉलिक्यूल दिया है, उसका हाइब्रिडाइजेशन ये है, हम लोग को कैसे पता चलेगा? धीरज धरो, सब कुछ बताऊंगा। Hybridization concept is applicable only for the covalent molecule, covalent compound. It is not applicable for ionic compound. ये याद रखना. Okay. So when I talk about covalent compound, for every covalent compound we can write hybridization. हाँ, एक टेक्निक है, शॉर्टकट है, बताऊंगा मैं. अपने टेक्स्ट बुक में वो मेंशन नहीं किया है, बट आई विल टेल यू. अपने टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये एग्जांपल्स मेंशन किए. So sulfur, the ground state electronic configuration, Ne, then we have 3s2, 3p4, right? So it is like this way. 1, 2, 3 and 4. 3d 0. Excitation में ये दो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? 3d में जाएंगे. So we have 3s1, 3p3 and 3d2. So now we have 1, 2, 3 and D2 1 and 2. So the hybridization is between 1 3s, 3 3p and 2d orbitals. तो वो ऐसे दिखते हैं, चार जो ऑर्बिटल्स है ना वो ऐसे दिखेंगे. sp3d2, 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 ये चार ऑर्बिटल एक प्लेन में रहेंगे और दो ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. परपेंडिकुलर मतलब ये चार ऑर्बिटल एक प्लेन में रहेंगे और ये दो ऑर्बिटल कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. अंडरस्टूड? यस. सो SF6 का स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा. सल्फर, is that clear? So this is F, F, F and F. So these four bonds are in one plane. तो इसको अगर मैंने जोड़ दिया तो ये बन जाता है क्या? स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर. एंड टू ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. तो एक ऊपर रहेगा ऐसे और एक नीचे रहेगा ऐसे, राइट? नाउ इफ यू जॉइन ऑल दीज बॉन्ड्स, मतलब ऐसे इमेजिनरी लाइंस मैंने ड्रॉ किया ऐसे. कैन यू सी दिस वन? सो ऊपर देखो जरा कितने फेसेस है यहाँ पे. 1 2 3 4. वैसे ही मुझे चार फेस नीचे मिलेंगे. सो दैट मीन्स इट हैज टोटल 8 फेसेस. ओके, सो 4 फेसेस अप and 4 faces down, and therefore shape of orbital, shape of this molecule is octahedron or octahedral, octahedral और octahedron. कोई बता सकता है क्या बॉन्ड एंगल रहेगा सब में? ये FSF, इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा? कोई बोल सकता है कितना हो सकता है बॉन्ड एंगल? 90. यस, वेरी गुड. ये होगा 90 डिग्री. और ये ऑब्वियसली प्लेन में तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री. सो हियर ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ व्हाट? 90 डिग्री. शेप क्या है? ऑक्टाहेड्रल शेप है. ड्रॉ दिस.
Come on, let's go for the next one. sp3d3. sp3d3 इसका एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली बता रहा हूं. IF7 देखो ना, 7 ऑर्बिटल्स है यहाँ, 7 ऑर्बिटल. तो उसका शेप डायरेक्टली बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो. ये आयोडीन है, F F F F एंड F. तो ये पेंटागन हो गया, है ना. दिस इज पेंटागन, करेक्ट. और ये रहेंगे दो परपेंडिकुलर, ऐसे. और में आ रहा है, मतलब ये ऐसा प्लेन है ना, तो उसको ऐसे, जैसे ऑक्टाहेड्रन में था वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर था प्लेन, यहाँ पे क्या है, पेंटागोनल प्लेन है. इसलिए इसका नाम है पेंटागोनल बाय पिरामिड. क्या नाम है इसका, पेंटागोनल बाय पिरामिड. एक तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर. व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ओवर हियर, यहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल रहेगा, कोई बोल सकता है? हाउ मच इज द बॉन्ड एंगल? 72. करेक्ट, 72 डिग्री रहेगा. और ये वाला बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, ये 90 डिग्री होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये होगा 90 डिग्री. राइट राउंड. सो अभी तक जितने भी हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स देखे, उन सब में आइदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इन्वॉल्व. ओके, now basically the exact geometry was explained by VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory. एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या है वो, पहले ये ड्रॉ करो तुम, ठीक है. Yes. If you finish, just tell me. Done, sir. Okay, good. चलो, just put the heading VSEPR theory. मैं एक मिनट में लिखता हूँ. First of all, I'll write it. Valence shell electron pair repulsion theory. Navalkar? Yes, sir. Okay, valence shell electron pair repulsion theory. Yes. Anybody sleeping? जगह निकला. अरे 22 लोग कौन गया? What is the problem? Network issue? Hi Vedika. Hello, sir. Hi. Rohan, good morning. Morning. Hi Mrinali, good morning. Yes, sir. So VBT could not explain the geometry or shape of the molecule. Okay. So to decide the geometry and shape of the molecule, VSEPR, that is valence shell electron pair repulsion theory. So it is famous by short form only, VSEPR.
Okay. Any central atom, कोई भी atom लो, central है कोई भी atom, it consists of two types of electron pair. एक होता है bonding electron pair और दूसरा होता है lone pair, मतलब non bonding electron pair. Okay. Central atom has two types of electron pairs. एक होता है bonding. Bonding मतलब those electron pair which are involved in a bond. So bonding pair or bonding electron pair. And the second one is lone pair. So lone pairs are also called as non-bonding electrons. So they have not participated in the electron. So what are the main features? Okay. So write down main features of VSEPR theory. First point. Note down. First point. Electron pairs of valence shell will try to arrange in a space in such a way that the repulsion between them is minimum. Obviously, वो तो जरूरी है. That is a necessary condition for the bond formation, right? Repulsion वहाँ पे कम होना चाहिए और attraction ज़्यादा होना चाहिए. Now, when I talk about only one atom, तो उसमें भी वही सीन है ना. Central atom का जो repulsion वो क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए. Okay? So electron pairs of valence shell मतलब ये है VBT उसका extension will try to arrange in space in such a way that the repulsion between them is minimum. Repulsion between them is minimum. Okay. Second example. Geometry or shape of the molecule is decided by number of bond pairs and number of lone pairs available with the central atom. Geometry or shape is decided by available number of bond pairs and lone pairs of electrons on central atom. Okay. Third point. If central atom contains only bond pair, then its shape will be symmetric. But if it contains both lone pair as well as bond pair, then its shape is distorted, unsymmetric. Okay. So if only bond pair electrons are present, then shape of molecule is symmetric. But if bond pair
and lone pair are present, then shape of molecule is distorted. Distorted मतलब change हुआ, थोड़ा सा change होता है, unsymmetric. Okay, please note down this. Point number 4. Since bond pair is under the influence of two nuclei, okay, since bond pair is under the influence of bond, bond is formed between the two atoms. Under the influence of two nuclei, the space occupied by bond pair is less. Space occupied by the bond pair is less, while lone pair is present on one atom. Therefore, it occupies more space. Okay. So, bond pair occupies lesser space than lone pair. तो उससे क्या होगा? जितना कम रहेगा ना, उतना रिपल्शन कम होगा ना. Okay. So point number 5. Order of repulsion. Order of repulsion. Therefore, लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा than लोन पेयर बॉन्ड पेयर than बॉन्ड पेयर. मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन कम होगा than that of the लोन पेयर. ओके, देखो ये कैसे बता रहा हूं. एग्जाम्पल देखो, समझो वी हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस वे, ए बी एंड दिस इज बी. तो ये जो है ना, इसमें क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. इसमें भी क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. चाहे बॉन्ड लेंथ सेम है, ठीक है. अच्छा, इसमें दो लोन पेयर्स है, ऐसे एक लोन पेयर है और ये भी एक लोन पेयर है. तो याद रखना, ये दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल है, मतलब एंगल है θ1. ये दोनों के बीच में एंगल है θ2 और ये दोनों के बीच में एंगल है θ3. ये भी θ2 ही है, right? So what I will say, θ1 is greater than θ2 is greater than θ3. Why? Because इसमें ज्यादा रिपल्शन है, तो एक दूसरे से ज्यादा दूर जाएंगे. इसमें उसके बाद रिपल्शन है और इसमें सबसे कम रिपल्शन है. क्लियर? 6th point. Pi bond or pi electron does not affect the geometry, but it affects the bond angle. Because of multiple bond, repulsion requires larger space. Pi electrons do not affect geometry of molecule, but because of
multiple bonds bond angle may vary, not equal. Suppose if I say A, so here we have a double bond B, double bond B, and here we have a C and C. So this bond angle is theta 1, this bond angle is theta 2, and this bond angle is theta 3. Theta 1 is greater than theta 2 is greater than theta 3. Clear? हाँ? थीटा 2 और ये भी थीटा 2 ही हो जाएगा ना फिर. Clear? समझ में आया सबको? अभी इसमें जैसे मैंने बताया, अभी यहाँ पे क्या होता है, there is a distortion of geometry. मतलब एक्चुअल जो ज्योमेट्री है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है. वो कैसे, ये पहले लिखो, फिर अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ शॉर्टकट हाउ टू डिटरमाइन दी हाइब्रिडाइजेशन. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका ज्योमेट्री भी, कॉरेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री भी देखेंगे. लिख लो. Yes, done everybody? Hello. Yes sir. चलो, अभी ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दिया है. मैं जो बता रहा हूँ उसमें तुम लोग को लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए. अभी तुम लोग अच्छे खासे मास्टर भी हो गए उसमें, हाउ टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर.
ओके, तो ये देखो, अभी मैं एक समरी देता हूं. व्हाट इज द समरी? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसको ना एक नाम है, इसको लोग बोलते हैं स्टेरिक नंबर. दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर्स, हाँ, लोन पेयर्स. ठीक है. सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स then hybridization और expected geometry, मतलब geometry. expected है, expected, रियल में कुछ अलग होता है. अगर दो रहेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन है एसपी, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है लीनियर. अगर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे तो एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन है sp2, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर. ये टेबल जो मैं दे रहा हूं उसको रट लो. अगर चार है तो sp3, दिस इज टेट्राहेड्रल. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज एक्सपेक्टेड. व्हेन VSCPR थ्योरी उसमें आ जाता है ना तो ज्योमेट्री चेंज हो जाता है. अगर वहां पे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है sp3d, दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ठीक है. अगर 6 है देन sp3d2, sp3d2, this is nothing but octahedral. एंड अगर 7 है तो sp3d3, पेंटागोनल बाइपिरामिडल. इसके अलावा तुम लोग के मन में, दिमाग में और रिसर्च तुम लोगों ने अगर किया और कुछ नया हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो वो गलत है. इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होते. Now, if you find it, give the reference. Okay, but that is not included in our syllabus. Remember this thing. Pentagonal bipyramid. शेप मैंने सबके बताया है तुम लोग को कैसे शेप होते हैं, राइट? प्लीज ड्रॉ दिस. ओके, और ये फॉर्मूला को याद रखना. दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर. राइट डाउन.
ओके गुड, हो गया, सबका हो गया, डन। चलो एक दो एग्जांपल्स हम लोग करते हैं एंड देन विल स्टॉप। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे। ओके हाँ, ये टेबल अभी तुम लोग के सामने है, जस्ट देखो मैं कैसे उसको अप्लाई कर रहा हूँ। देखो मीथेन का स्ट्रक्चर, तो मीथेन का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, स्ट्रक्चर ये है। So tell me how many sigma bonds are associated with carbon? 4 4. How many lone pairs are associated with 0 carbon? तो इसका मतलब 4 plus 0 that is equal to 4. Steric number 4. So number of hybrid orbitals भी कितने? 4. इसलिए इसका hybridization क्या हो गया? sp3. चलो अभी देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अमोनिया NH3। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं? तो देखो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1 2 3, 3 तो यूज हो गए, बचे और 2, दैट इज नथिंग बट योर अ लोन पेयर। सो कितने बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है बोलो? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। एंड हाउ मेनी लोन पेयर? लोन पेयर ये एक लोन पेयर है, so 3 plus 1 so 4, that means ammonia में nitrogen undergo which hybridization? sp3 hybridization। और देखो H2O, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है कि नहीं? ये हो गया एक बॉन्ड, ये हो गया दूसरा बॉन्ड, 1 2। देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, सो 1 2, तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 4 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे। तो ऐसे कितने पेयर्स हो गए इसमें? ये एक लोन पेयर हो गया, ये दूसरा लोन पेयर हो गया, कितने बॉन्ड्स हो गए? 2। सो 2 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, 4 हो गए, दैट इज नथिंग बट व्हाट? sp3 hybridization। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस, ये समझ में आया सबको? एनी डाउट? कोई बोल नहीं रहे, सुना ही नहीं दिया मुझे मेरा बात। हेलो? Yes, sir. हाँ, अभी C2H4 देखो, C2H4 का स्ट्रक्चर कैसा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये मीथे हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन। कितने सिग्मा बॉन्ड्स है एक कार्बन के? यहाँ पे हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? देयर इज 0 लोन पेयर। pi bond is not a lone pair, लोन ये अकेला होना है, तो इसलिए यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? 3। सो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp। टेक डाउन दिस, हम लोग और एग्जांपल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हियर वी स्टॉप फॉर टुडे। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? दोज हु हैव अ डाउट स्टे विथ मी, दोज हु डोंट हैव दे कैन लीव। बाय बाय। ये कंप्लीट करके मीटिंग लीव कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। Bye, sir. Thank you.